The thick skin. Skin in the thick skin. Thick skin में this upper portion is the epidermis. ये देखें ये डिस्जंक्टम बन रहा है और डिस्जंक्टम भी किससे बन रहा है? केराटिन से बन रहा है, किसी और चीज से नहीं बन रहा है. So this upper portion is the epidermis. This lower portion is the dermis. Epidermis is the stratified squamous keratinized epithelium, and dermis is the layer of the connective tissue. That type of the connective tissue. So upper portion में the epidermis consists of the epidermis consists of the 5 layers. वो 5 layers कौन सी हैं? The layer of the columnar cells, the basal layer of the columnar cell called the stratum germinativum, and the layer of the polygonal cell called the stratum spinosum, the layer of the squamous cell called the stratum granulosum, the translucent layer called the stratum lucidum, the layer of the keratin called the stratum corneum, and this additional layer जो आपके ऊपर बन रहे हैं by the keratin, these are called the stratum corneum. Oh sorry, this is the additional one layer. A broad keratin visualized keratinized layer, उसके बाद the number of the cell layers and the stratum lucidum also visualized. It means this is the thick skin. Or beneath the thick skin epidermis is the dermis visualized. The dermis consists of the upper and the lower layer. This upper one is called the papillary layer. These papilla are visualized. The papillary layer and the reticular layer. In the papillary layer, the arrangement of the fibers and the cells is different. In the reticular layer, उसमें बोलते हैं कि the interlacing of the fibers. ये दूसरे के साथ यूं एक mesh work बनाते हैं, एक जाल सा बनाते हैं. So this upper one is the papillary, this lower one is the reticular. So the slide of the जी नीचे दिखा दें. एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू के मसल्स भी होंगे, मसल्स भी आपको नजर आएंगे. और एडिपोज टिश्यू ये है ग्रुप ऑफ द फैट सेल्स, उसके अंदर आपके कुछ ब्लड वेसल्स एंड सम कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, सम कनेक्टिव टिश्यू सेल. उसके ऊपर सारा आपको कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स भी होंगे, सेल्स भी होंगे, ब्लड वेसल्स भी होंगे, नर्व्स भी होंगे, एडिपोज भी होंगे. ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. सही जी. दिस स्लाइड ऑफ द स्किन डेंस, सारा डेंस है, सारा डेंस. इसके नीचे जो पेशियां होगा उसमें लूज फैट होता है.